हेलो गाइस। चलो आज एक और DILR का सेट लेके आया हूँ। कैट 2022 स्लॉट 1 DILR। दिस वाज easy to moderate kind of set. ठीक है, it was a very doable set in the exam time. It would probably take around anywhere between close to 12 plus minus 2 minutes. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेता ये। So it was a very much doable set, और अगर आप ये करते तो आपको डेफिनेटली 5 into 3 15 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाता। ठीक है। So before looking at the solution, attempt at least attempt once। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है इसको। चलो लेट्स स्टार्ट। The management of a university hockey team was evaluating performance of four women's का वो लोग performance evaluate कर रहे थे। ठीक है, and who are the four women's? A, B, H and S. Further possible selection in the university team for next year. For this purpose, the management was looking at the number of goals scored by them in the past 8 matches. कितने matches? Past 8 matches, numbered 1 through 8. The four players together had scored a total of 12 goals. Total 12 goals उन्होंने score किया in these matches. In the 8 matches, each of them had scored at least one goal. ठीक है? No two players had scored same total number of goals. तो बहुत important चीज है। So total number of matches is 1 to 8. ठीक है? This is matches. Total number of goals is 12. Total number of players is 4. ठीक है? Each player at least one goal, and no player same goal। ठीक है, चलो इसको दोबारा देखते हैं। व्हाट आर वेयर रिटन। ये पैराग्राफ का मतलब क्या है? इसको कॉन्साइज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज हाउ मच? टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज 8। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज हाउ मच? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज 4। अब प्लेयर्स का वी हैव बीन गिवन टू कंडीशंस। एट लीस्ट वन गोल। ठीक है, each of the player has scored at least one goal and none of the players have same number of goals. No players same number of goals. So ये paragraph से we can deduce this summary out of this paragraph. Additionally, we have been given 1 2 3 4 5 6 points. चलो आगे देखते हैं। The following facts are known about the goals scored by the four players only. All the questions refer to the goals scored by these four players. So just after you read this paragraph, you must be able to visualize that यहाँ पे मैचेस है और प्लेयर्स है। ठीक है, यहाँ पे मैचेस है और प्लेयर्स है। तो मेरे पास देयर हैज टू बी रिलेशन बिटवीन मैचेस एंड प्लेयर्स। तो मेरे पास कुछ टेबल आएगा यहाँ पे। सो इट इज अ टेबल काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और वहाँ पे वंस यू गेट अ टेबल, सो टिक के अक्रॉस होता है वहाँ पे। ठीक है, तो अब ये बाकी 6 स्टेटमेंट्स देखते हैं। एंड वी नीड टू get a starting point. Whenever you get, let's say, n number of statements, try to look for the starting point always. Starting point मतलब जहाँ से आपको start करना है। तो चलो इसको देखते हैं। Only one goal was scored in every even number of match। ठीक है, every even number match में one goal was scored। ठीक है, this is a very good starting point. Harita scored more goals than Bimla। ठीक है, H is greater than B. The highest goal scorer scored goals in exactly 3 matches। Very important. Exactly 3 matches, including match 4 and match 8. अब देखो, try to correlate statement 1 and statement 3. Only one goal was scored in every even numbered match. तो match 4 में भी one goal,
मैच 8 में भी 1 गोल, ठीक है। एंड द हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस। एक मैच 4 में उसने गोल स्कोर किया, एंड एक मैच 8 में उसने गोल स्कोर किया, एंड देयर मस्ट बी सम अदर मैच जहाँ पे उसने रिमेनिंग नंबर ऑफ गोल्स स्कोर किया। बिमला scored a goal, that means 1 goal in match 1, ठीक है, and one each in 3 other consecutive matches. इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो you can see कि we have been given total number of goals scored by बिमला। कैसे? मैच 1 में उसने कितना गोल स्कोर किया? 1, and 1 in each 3 other consecutive matches, तो 1 plus 3, so बिमला has how much? बिमला has 4। और देखो, once you got the number of goals scored by Bimla, you can correlate point 4 and point 2 because H is greater than B. H is greater than B. So H is greater than 4. अब how many total number of goals were there? There were total 12 goals. अब देखते हैं। A, B, H, S. B is 4, पता है मेरे को. So H can be 5. ठीक है. If this is 5, this is 4. So 9 already हो गया. So I am left with 3. So 3 को कैसे अरेंज करोगे? 1 या 2 में. So either this will be 1 or 2, or this will be 2 or 1. ठीक है. तो if B is 4, H can be 6 also. तो अब देखते हैं ये पॉसिबिलिटी, 6 4 10, तो 10 प्लस 2, इसको कैसे ब्रेक करोगे? ओनली पॉसिबल केसेस 1 1, 0 तो नहीं हो सकता बिकॉज ईच ऑफ देम हैज स्कोर्ड एटलीस्ट 1 गोल, तो 1 1। इफ यू राइट 1 1, दिस इज नॉट अ पॉसिबल केस, क्यों? नो टू प्लेयर्स हैड स्कोर्ड सेम टोटल नंबर ऑफ गोल्स, so the only possible case is this one, where B is 4, H is 5, and I don't know about A and S. Which one is 1, which one is 2? Okay. An equal number of goals was scored in match 3 and match 7. Okay. If this is X, this will also be X, which was different from the number of goals scored in either match 1 or match 5. So match 3 and match 7 were equal, but match 1 was not equal to X, and match 5 was also not equal to X. And also match 1 was not equal to match 5. This is also very important. Point 6, the match in which the highest number of goals scored was unique, and it was not in match 5. ठीक है. So on the basis of all these information, चलो एक रफ टेबल बनाते हैं. 4 5 6 7 8, ठीक है. These are the number of matches. चलो एक अच्छे से टेबल बनाते हैं पहले. चलो the table is ready. Now let's start filling the tables. ठीक है. Only one goal was scored in every even numbered match. Even numbered match कौन कौन सा है? ये वाला, this one, this one, and this one. ठीक है. Harita scored more goals than Bimla. ये भी हो गया, ये भी हो गया. The highest goal scorer scored goals in exactly 3 matches, including match 4 and match 8. Highest goal scorer कौन है? Harita. So she must have scored in match 4 and match 8. Match 4 Harita, 1 and match 8 Harita. ठीक है. तो और यहाँ पे और कोई स्कोर नहीं करेगा. ठीक है. Now this is also done. Now Harita's only one match is left. ठीक है. Bimla scored a goal in match 1. Okay. Bimla scored a goal in match 1. Okay. And one in each 3 other consecutive matches. अब देखो, 3 consecutive matches चाहिए where Bimla is scoring 1 goal in each of the match. Can it be 2 3 4?
नहीं, बिकॉज 4 में तो इसने किया ही नहीं है। 3 4 5 भी नहीं हो सकता, 4 5 6 भी नहीं हो सकता। ओनली केसेस 5 6 7, जहाँ पे बिमला कैन स्कोर कंजिक्यूटिवली 1 1 1। ठीक है, अब बिमला का कोटा इज ओवर 1 2 3 4, तो बिमला ने और कहीं पे स्कोर नहीं किया। ठीक है, अब दिस इज ऑल्सो डन। An equal number of goals was scored in match 3 and match 7, which was different from the number of goals scored in either match 1 or match 5. So this is x, this will also be x, this will be y. ठीक है, चलो, this is also done. Now, point 6, the match in which the highest number of goals was scored was unique and it was not match 5. Highest number of goals. अब देखो, how many goals have been scored up till now? 1 2 3 4. I'm left with 8 more goals. ठीक है, अब हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स कहाँ पे हो सकता है? हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स कहाँ पे हो सकता है? एंड इट इज नॉट मैच 5। देखो, सबसे पहले तो हाईएस्ट यहाँ पे नहीं हो सकता, 1 पे, 2 पे नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 गोल यहाँ पे है। 4 पे भी नहीं हो सकता, बिकॉज ऑलरेडी 1 यहाँ पे। 6 पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गोल्स वाज यूनिक आल्सो। द मैच इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स वाज स्कोर्ड वाज यूनिक। यूनिक, अब यूनिक है तो 3 and 7 भी नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज 3 और 7 में तो इक्वल नंबर ऑफ गोल्स है। एंड इट वॉज नॉट मैच 5 ऑल्सो, मैच 5 भी नहीं है। सो द हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन मैच 1 ओनली। तो हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन मैच 1 ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे आओ। पॉइंट 3 पे, द हाइएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग मैच 4 मैच 8। और कहाँ पे गोल स्कोर किया उसने? और ऑब्वियसली यहीं पे किया उसने, हाईएस्ट वाले पे ही। तो इसका और कितना बचा हुआ है? 1 1 और 3। तो नाउ दिस इज कंप्लीट, दिस इज 4। अब देखो, नाउ लुक एट दिस वन। कितना हो गया मेरा? 4 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक है, 8 is already done. Now 2x plus y should be equal to how much? 4. 2x plus y should be equal to 4. x1, y3, x2, y0. Sorry, this will be 2. X is 1, so y is equal to 2. X is equal to 1, तो y is equal to 2. ठीक है, जब x equal to 2, तो y equal to 0. So only possible cases when x is 1 and y is 2. So x is 1, x is 1 and y is 2. ठीक है, सा, सारा केस सेटिस्फाइड हो गया एंड एवरीथिंग इज डन। अब देखो, 6 का यहाँ पे 1 हो गया और 1 ही टोटल चाहिए, तो यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। 7 के लिए 1 चाहिए, 1 ऑलरेडी हो गया, यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 चाहिए। आई डोंट नो वेदर इट इज दिस और दिस। एंड ऑल्सो फॉर एस आई डोंट नो कहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इट कैन बी आइदर दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। सो माई टेबल इज कंप्लीट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 7?
मैच 7 में कितना गोल स्कोर हुआ था? मैच 7 was x was equal to 1. So option D. Which of the following is correct sequence of goals scored in matches 1, 3, 5, 7? 1, 3, 5 and 7. 1 पे कितना था? 4. 3 and 7 were equal with 1, 1 and 5 was 2. ठीक है, 4, 1, 2, 1. 4, 1, 2, 1. Option B. Question 3. Which of the following statements is are true? Statement 1. Amal and Sarita never scored goals in the same match. A and S never scored goals in the same match. चलो इसके लिए we need to look at the table. Let's look at question 3. So I've drawn the table for only H, S and A. ठीक है? And the remaining goals which are need to be scored in the remaining matches. ठीक है? Now let us see. Statement 1. A and S never scored goals in the same match. Now look closely for A and S. ठीक है? How many remaining goals are there in this one? 1, 1, 1. ठीक है? In this case, either S or A will score, either S or A will score, either S or A will score. ठीक है? So in none of these three cases, match 2, match 3, match 5, both of them can score. ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो बैंक बैलेंस में तो 1 गोल ही है. अगर 2 गोल होता कहीं पे तब तो दोनों करता. ठीक है? So in either of the cases, either S or A will be scoring 1 goal. Both of them cannot score in the same match. ठीक है? तो statement 1 is true. Now statement 2, H and S never scored goals in the same match. This is very true. H scored in 1, 4 and 8. ठीक है? यहाँ पे तो S कहीं पे है ही नहीं. S यहाँ पे भी नहीं है, S यहाँ पे भी नहीं, S यहाँ पे भी नहीं. So this is also true. So option B is the correct answer. देखते हैं next question. I've drawn the table once again. Now let us look at question 4. Which of the following statements is our false? Very important. ठीक है? Statement 1. In every match, at least one player scored a goal. ठीक है? Use with common sense. ठीक है? क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया हुआ था ना कि in each match at least one goal was scored. This is not related to the table only. ये तो वो स्टार्टिंग वाला जो पैराग्राफ है, if you have read that paragraph very carefully, you could get hold of this statement. ये statement का मतलब क्या है? So this is true. तो ये true है. Statement 2. No two players scored goals in the same number of matches. H, S, B, A. H is how much? H is 5. B is how much? 4. ये पता नहीं 1 2, ये 2 1. ठीक है? No two players scored goals in the same number of matches. No two players मतलब कोई भी player ऐसा नहीं है जो scored the goals in same number of matches. तो H कितने मैच में स्कोर किया उसने? 5 गोल कितने मैच में? 1 2 3, 3 मैचेस में. एस एस या तो आइदर 1 मैच में करेगा या 2 मैच में करेगा. बी 4 मैचेस. ए आइदर 1 मैच या 2 मैच. ठीक है? सो नो टू प्लेयर्स स्कोर्ड गोल्स इन द सेम नंबर ऑफ मैचेस. कोई भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा आपस में. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स? नन ऑफ द स्टेटमेंट्स. ऑप्शन ए. Question 5. This is also a very interesting question. If Harita scored goals in one more match as compared to Sarita, that means अगर हरिता ने 1 2 3 मैचेस में उसने गोल स्कोर किया है, that means सरिता 2 मैच में she will score a goal. तो this is 2. ठीक है? तो सरिता 2
and then Amla will be 1. Which of the following statements is are necessarily true? कौन सा true है? Amla scored goals in consecutive matches. उसके पास तो एक ही गोल है स्कोर करने के लिए. हाउ कैन शी स्कोर गोल्स इन एंड गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस? ठीक है, गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस. तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स. स्टेटमेंट टू, Sarita scored goals in consecutive matches. Sarita scored goals in consecutive matches. Is it possible? Is it necessarily true? Necessarily true. Sarita, no doubt, दो गोल्स उसको करना है. ठीक है. It can be here, here also. It can be one here also. ठीक है. It can be one here and one here also. So it is not necessarily consecutive. ठीक है. अगर if one is match 5 and other is here, तो यहाँ पे तो बीच में गैप हो गया ना. So this is also not necessarily true. So this is also false. So necessarily true कौन सा है? None of the statements option A. So I hope ये सेट आपको समझ में आया है. ठीक है. दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट. मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था करके, बिकॉज इट वाज अ डूएबल एंड ऑल्सो माइंड क्रंचिंग. एग्जाम टाइम में विद इन दैट प्रेशर you could have solved it in, let's say, at max 12 minutes. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगता. तो 12 minutes, 15 marks is a decent bargain. चलो, थैंक यू. चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में. ठीक है. बाय.